भाई 5 महीने बचे हैं, जो कर सकता है कर ले, बाकी भगवान के हाथ में डाल दियो. सो ईच डे of those 5 months, I craved for excellence, to give my best, give my best, give my best. And when I used to give my best also na, I never used to think अरे वाह 12 घंटे पढ़ लिया. मैं यही सोचता था किया है ना पाप, कल भी पढ़ना पड़ेगा. So I think that thing is what made me get a rank. बैकग्राउंड के होते हुए रखते हैं एआईआर लाने का दम. साइंस बैकग्राउंड के होते हुए रखते हैं एआईआर लाने का दम. सोल के होते हुए अब लॉ की चिंता नहीं करते हैं हम. So ladies and gentlemen, we have with us today CA Shubham. तो CA Shubham sir ना सिर्फ AIR 4 ला चुके हैं अपने CA फाइनल्स में, बट उन्हें आर्टिकलशिप भी बिग 4 यानी डिलॉयट से की थी. एंड उसके अलावा अब सर इज टीचिंग लॉ टू CA इंटर एंड CA फाइनल स्टूडेंट्स. So well, thank you so much for accepting our invitation, sir. It is an honor to host you today, and looking forward to a wonderful and insightful conversation with you. Thank you, Avni. Thank you. Thanks a lot. The legit RVG style introduction, and it's been long, and there has been so many interviews, but there has been no such introduction. That's a speciality of RVG. Thanks a lot for inviting me here. Thanks a lot. So thank you so much, sir. And now And let's I think start one thing you missed in the introduction, which was very important. I'm so sorry. One thing you missed was from RVG Hostel. That was the most important point. Absolutely, we cannot forget that. So sir is alma mater of RVG, and yeah. So it is so good to see you people as our seniors to inspire us, and yeah, so amazing. So like, let's start with the very start of this journey. That is 12th standard तक जिनके पास science थी. How did that boy end up doing CA? So how did CA happen after science? So science happened, and that is why CA happened. I think when I did science, I realized अपने बस का नहीं है. मतलब बस का मतलब क्या, वो तो इच्छा ही नहीं है. अभी उसमें तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो because logic left after a certain point of time. So I thought that science is definitely not something that I want to pursue, and I convinced my dad. So I had मेरे बड़े पापा जो हैं, जो ताऊजी है, उन्होंने, he is a CA. So I once visited him and I saw his, lifestyle and how he lives, how many car he has, and I thought ये सब कैसे आता है? तो he said CA करके आता है. तो मैंने बोला अच्छा CA करने से आ जाता है? तो बोला हाँ चलो फिर CA करते हैं. तो लोग डॉक्टर भी बनने बोल रहे थे, डॉक्टर से भी आता है, CA करने से भी आ जाता है, CA कर लेते हैं. And obviously being a Marwadi and being from that family, you are into business. Usually you like business and you think that CA is the degree which is closest to business. So I think that was the motive. It was a little difficult to convince my dad, but yeah, then I decided and I convinced him that I don't want to pursue science anymore. अपन CA में ही कुछ कर लेंगे. So that is how it all, started. Nice. So what was your CPT and CA intermediate like? Because, आपके पास वो background नहीं था of accounts, which commerce students had. So how difficult was it and how did you manage? So CPT was relatively, I would not say difficult, but challenging at that age because you don't know accounts, right? So I remember हम accounts की क्लास में हुआ करते थे और हम लोगों को वो कैश फ्लो सिखाते थे, या कुछ तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखाते थे. तो वो ऐसा कुछ हाथ से सिग्नल्स कराते थे कि आ रहा है पैसा, जा रहा है, और हम लोगों को कहते क्वेश्चन सॉल्व करो. तो हम साइंस वाले ऐसे हाँ आ रहा है ऐसे करके नोट्स में करते थे. उतने में कॉमर्स वाले खत्म करके चिल्ला देते थे. तो उस समय वो बहुत डीमोटिवेटिंग होता है. बट फिर अकाउंट्स के बाद मैथ्स भी आता था, तो हम साइंस बैकग्राउंड से विद मैथ्स, तो फिर हम उस समय उनको बदला चुका करके इट हैपेंड. सो आई स्किप्ड माय जून अटेम्प्ट. आई कुड हैव possibly tried and given June attempt for CPT, but I skipped because of some seniors advice and I decided to go for December attempt because it helped me learn accounts in a better way. And I thankfully did that because इंटर में, फाइनल्स में, सब जगह अकाउंट्स का इतना रोल है, उसके बाद भी अकाउंट्स का इतना रोल है कि यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर फाउंडेशंस ऑफ अकाउंट्स. सो I think that was a good decision. So CPT was broadly not challenging, I would say interesting, because you are learning. इकोनॉमिक्स दोनों के लिए नया होता है, मैथ्स उनके लिए डिफिकल्ट होता है, अकाउंट्स हमारे लिए नया होता है, और लॉ भी दोनों के लिए नया ही होता है. तो ब्रॉडली इट वाज एट पार फॉर एवरीवन. एंड देन इंटर, सो CPT went well and I scored 85% in CPT.
CPT. So that gave me confidence to crack inter also, because वो confidence के साथ तुम्हारे पास हमेशा backing है, करे मैंने CPT कर लिया तो इंटर कर लेंगे करके आई थिंक इंटर में वो रोल खत्म हो जाता है साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड का. इंटर में योर एवरीथिंग इज इवन. पर तो आई थिंक दैट वाज द मोटिवेशन. CPT हैपेंड एंड देन CPT के मार्क्स की वजह से इंटर हैपेंड. So it was pretty amazing. Okay, nice, very interesting in fact. So आपने मतलब पूरा journal entries से basic से you had started is what I would say. तो पूरा मतलब कर रखा है. Yes, absolutely. मतलब जितना हमारे CPT के कोर्स के लिए रेलेवेंट था, जितना हमारे कोर्स के लिए रेलेवेंट था. अभी मेरे को पता नहीं 11th-12th का अकाउंट्स 2 साल करते हैं, मैंने 6 महीने किया है, तो ऑब्वियसली सब कुछ नहीं किया होगा. शायद वो लोग के ज्यादा बैलेंस शीट्स टाली हुए होंगे, मेरे इतने नहीं टाली हुए होंगे, पर किया है, लगभग काफी सारा किया है. Okay, nice. So now coming to the articleship, आपने Big Four से articleship की थी. So how did you decide, like Big Four versus mid-size is a argument which everyone goes through. एक वो phase होती है. So how did you decide you'll join a Big Four? So how did I decide that I'll join a Big Four? Okay. Actually, that's a very opposite question. Usually people ask, where do you want to go and how did you get into a Deloitte? But how did I decide Big Four? Basically, my marks in inter were decent. I would not say great, it was decent because I scored around 437 out of 700. हाँ, लोगों को लगेगा 800 में से 430 लाया. Out of 700, I scored 432, and that was too much for me because beyond 350 was to pass. Beyond 350, every mark was a tap on my shoulder कि भाई क्या उखाड़ा है तुमने. तो it according to me in my head it was very nice marks. मैंने बोला रैंक वैंक होता होगा पर ये अच्छे मार्क्स है. तो I thought Big Four में someone told me that when you clear both group with good marks you get an opportunity to get into Big Four. तो मेरा मन था, मैंने कोशिश किया. अभी उस समय तो पहले तो फिगर आउट करना होता है एक तो Big Four होता क्या है, पहले तो Big Four सीखो, फिर उनके नाम सीखो. अर्नस्ट एंड यंग समझ ही नहीं आता है नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है. तो इस तरीके से फिगर आउट किया, सब जगह इंटरव्यूज वगैरह के लिए डाल दिए, CV भेज दिए, और बाद में इंटरव्यूज होने लगे. KPMG का इंटरव्यू हुआ था. आई रिमेंबर आई हैव सेड दिस स्टोरी आल्सो वंस दैट KPMG का इंटरव्यू हुआ था एंड आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली टू अटेंड दैट इंटरव्यू. एंड दिल्ली में when I went to attend that interview, I saw people around me are so far better than me in terms of everything. Probably in terms of marks हम लोग के आगे पीछे होंगे थोड़े बहुत, बट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ ग्रीटिंग, एंड आई एम लाइक वो आकर कितना कॉन्फिडेंटली है, एंड आई एम लाइक चलो. तो उस तरीके से इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट टू क्रैक अ KPMG इंटरव्यू. एंड आई रियलाइज यार ये तो एक तो इतनी बड़ी ऑफिस और तुमको लगता है यार यहाँ पे तो मैं नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस प्लेस, एंड देन विद दैट नेगेटिव इमोशंस यू एंटर दैट हॉल. So I was not able to crack. मतलब I was far away from cracking. I was thrown out in the GD itself. मेरा मुंह वो खुल ही नहीं रहा था. I was blabbering. So after that I realized कि बस I have to get into one. No, it's not that मेरे को चाहिए ही चाहिए. I thought I wanted to learn it. I wanted to learn how to crack an interview, how to get into one. So after that I started reading a little bit. Group discussion कैसे होता है? Because इंटर के बाद जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हो ना, तो आपसे इतना ज्यादा इंटरव्यू स्किल्स का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. बस यही होता है कि थोड़ा ओपन हो, थोड़ा बोल ले, थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स बेसिक हो, उनको चल जाता है. तो देन Deloitte happened. Deloitte had an interview. वो थोड़ा KPMG की लर्निंग से Deloitte में वो प्रिपेयर होकर के गए थे मेंटली कि बड़ी ऑफिस होगी, बड़े इंग्लिश वाले लोग आएंगे, तेरे को कम इंग्लिश में जितना आता है सारा बोल देना है. तो not that my English is bad or not that I don't, but दिल्ली की इंग्लिश अलग होती है, मुंबई की इंग्लिश अलग होती है. तो that way then I realized कि बस let's crack this, and then Deloitte happened. So when that happened I didn't want to lose that opportunity. मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जो मेरे को कहते थे बिग फोर नहीं भी करेगा तो चलेगा, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, और अगर कुछ तो ये भी थे कि ऑफर लेटर के बाद कहते थे मत ले, तू ऑफर लेटर मत ले, बिकॉज यू शुड गो फॉर अ मिड साइज, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस. बट देन अगेन आई न्यू दैट देयर वाज अ प्रोविजन कि एक साल तुम करो, अगर एक साल नहीं जमा तो तुम रीजंस दे करके यू कैन स्विच. Although there are a lot of people who cause difficulties, but Big Four में usually difficulty नहीं होती. So I thought we'll go for it, and then it didn't stop. It continued for 3 years. Okay, so using this as a segue for our next question, usually, like, as you already mentioned, you were from a small town. So how did Deloitte get lavish offices or the corporate culture? Like, how did you manage? What were the challenges and learnings? So honestly, very honestly, it was not easy. Okay, because I am not, fortunately by God's grace, I had a good education despite being in a small town. So I had studied
till 10th standard from an ICSE medium, so I had a decent English. I could talk to people. ऐसा नहीं कि वो English बोल रहे हैं और मैं हिंदी में reply कर रहा हूँ, इतनी बुरी हालत नहीं थी. But when I entered that place, now you actually feel small at the start, because there are people who are earning, there are people who have cars, there are people who have a way to conduct themselves. They are like, हम तो उस समय तक we used to have basic manners. The corporate culture is altogether different, and I don't think it is about town. I don't think it is about place. अगर मुंबई में भी एक स्टूडेंट जा करके ऑफिस जाए ना, तो उसको समझ आएगा कि ऑफिस एक अलग जोन होता है. हम होते हैं दोस्तों के साथ ही मस्ती करने वाले लोग, एक तरफ हॉस्टल में रहने वाले लोग. अचानक से तुमको ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पे तुमको खाना एकदम तुम लोगों को तरीके से खाना है, तुम लोगों को एकदम मैनर से बिहेव करना है. सो इट टेक्स टाइम टू build in yourself, right? It cannot happen overnight. So I remember there are instances about me doing activities in Deloitte that I can never even share. I really hope none of my friends come out and share that kind of thing. They'll spoil my whole image. But Deloitte, when I was there, it initially when I remember when I went to their office for the first time after getting an offer letter, जब हम पहली बार ज्वाइन करने गए, तो I think 32-33 फ्लोर्स का बिल्डिंग, और वो 33 फ्लोर से जो मुंबई दिखता था, मतलब वो विंडो पे जाकर के अपने को वो अक्षय कुमार की मूवी है ना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वैसी वाली फील आ जाती थी. ऐसी ऑफिस थी उनकी शुरू में. सो फर्स्ट ईयर वाज तो फुल्ली वो मतलब तुम लोगों की अलग ही लाइफ चल रही है, पर सेकंड ईयर में रियलिटी तुम यू गेट हैबिचुएटेड ऑफ इट कि वही चीजें. बट आई थिंक द कल्चर वाज डिफिकल्ट. सो देयर इज अ कल्चर इन मल्टीनेशनल कंपनीज और कंपनीज व्हिच हैव यूएस कल्चर दैट यू कॉल योर सीनियर विद देयर नेम, यू डोंट कॉल देम भैया. ओके, मैं छोड़ ही नहीं रहा था भैया बोलना शुरू में, तो मेरे से छूट ही नहीं रहा था, और उनको इतना वियर्ड लग रहा है कहाँ से आ गया यार ये भैया भैया कर रहे हैं. तो मेरे को लगा यार एक मेरे से 40-45 साल के लोगों को नाम से बुलवा दे रहे हैं. मैंने बोला पापा को मैं नहीं बुलाता, ऐसे थोड़ी जाके मैं पापा को अपने नाम से बुलाऊंगा उनके नाम से. सो इट वाज रियली डिफिकल्ट, बट देन gradually I got habituated of it. And then when I got habituated, na, I realized that it is okay. It is okay to learn both the cultures and to be so flexible कि आप उस कल्चर में भी अडॉप्ट कर पा रहे हो जहां सिर्फ नाम से बुलाना है, और इस कल्चर में भी जहां भैया बुलाना है. सो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नहीं तो शुरू में हमको कैसे लगता है ये तरीका थोड़ी है कोई, बट या देन everything happened one day at a time, and gradually I gelled in with them, with all of them. So now you in the first year of articleship आपने बहुत सारे field businesses भी explore किए थे. So exactly field businesses क्या होते हैं and how did it help you? What were the learnings from field businesses? Okay. So by field businesses you mean the kind of like other activities that I used to explore in my first year? Is that what you mean? Yeah, so basically I'd seen one of your interviews जिसमें आपने कहा था that in your first year you did not do a lot of lectures but you explored a lot in terms of field businesses, like बहुत आपने explore किया है. So what were that? So in the first year of my articleship, I was not at RVG, okay, because RVG mein the costs are so nominal, and whatever you earn from a big four, it is sufficient to meet your cost. But in the first year of my articleship, I was not at RVG. I was in a place close to my office, but that place was very costly. And although it was costly, it was not a good place to stay. So I didn't want to stay at that place, but there was no option because every other place was so costly. So I thought that, और मैं जितनी घटिया जगह पे रह रहा था उसके बाद भी मेरे को घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे थे, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था लॉजिक क्या है. ना मैं खुश होकर के रह रहा हूँ और घर से पैसे भी आ रहे हैं, और मेरे को ऑफिस से पैसे आ रहे हैं वो पूरा रेंट में चला जा रहा है. एंड Deloitte used to pay 10,000 in first year, 15,000 second, and 20,000 in third year. So I realized बस ऑफिस तो है जो है, लेकिन उसके अलावा टाइम बहुत है, तो बहुत कुछ करने को है. तो मैंने पहले पे तो शुरू में तो मैंने बहुत सीरीज देखे, फ्रेंड्स खत्म कर दिया, सूट्स खत्म कर दिया, पता नहीं बैक टू बैक सीरीज देखता हूँ आज, उसी के सहारे में जी रहा हूँ, उन्हीं सीरीज के सहारे. लेकिन आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट वी आर इन मुंबई इट इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. तो यहाँ पे कुछ करना है अगर तुमको, तो कोई तुमको जानता नहीं है, नो वन नोज यू, राइट, नो वन विल जज यू, अरे ये तो उनका बेटा है और ये सब कर रहे हैं, तो मैंने जो करना है करो. So I will not get into the details, but I have sold train tickets in terms of वो एक कार्ड बनता है ना अपना 5% वाला कार्ड, 5% वाला, तो मैंने खुद नहीं बेचा, मतलब मैंने एक बंदे को बैठा करके वो, I'll not get into the details, but I sold train tickets, I sold movie tickets, and that was a proper business that I had set up, which used to, at that point of time, I'm talking about December 2016, demonetization के समय पे, I used to earn like 1 lakh rupees in a month doing that movie business, whatever it was. And that was for a span of 3-4 months.
3-4 महीने बाद वो बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर था जहां पे ना 50% डिस्काउंट मिलता था, और उसमें ना एक लूप होल था एक सॉफ्टवेयर में, तो वो लूप होल का मैंने बहुत अच्छा फायदा उठाया था। किसी को अगर इसके बारे में बात करनी है तो अकेले में मैसेज करना, मैं यूट्यूब पे तो नहीं बोलने वाला जरूर, बट वो डेफिनेटली लूप होल आपको अब इसके नहीं है। बाद वैसे एक तुम लोग मैसेज सोचोगे आएगा। इससे तुमको अगर ये लग रहा है कि ये बता दो सर हमारा खर्चा निकल जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है, बट दैट वाज अ स्मॉल लूप होल। उस समय ना तुमको लिमिट नहीं थी, 50% कैशबैक अगर आ रहा है तो उसमें कोई लिमिट नहीं थी, तो उसका मैंने बहुत सॉलिड बिजनेस बनाया था। और जब तुम कोशिश करते हो ना, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग ना सपोर्ट में आ गए। मतलब जैसे कि मेरा टाई अप हो गया था एक मूवी थिएटर के, जो थिएटर में जो वो बॉक्स बॉक्स होता है जहां पे लोग बैठते हैं टिकट बेचते हैं, उससे मेरी बातचीत हो गई थी। और उसको मैंने बोला था भाई मेरे टिकट्स मैं तेरे को बुक करके दूंगा, तू बेचना, और वो मान गया। और हम लोग मतलब बाहुबली जैसे मूवीज आए थे उस समय पे, तो हम लोग 200 200 250 टिकट दिन के बेच रहे थे, और हेवी हेवी अर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट देन फेब्रुवरी मार्च के महीने में ऐसा हुआ कि वो पर्टिकुलर ऐप ने उसने कुछ अपने चेंजेस किए, और मेरा जो पूरा बेस मॉडल था वो खराब हो गया। बट इट वॉज अ मेजर एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस गेव मी अ बिलीव दैट कोशिश कर ले कुछ तो होएगा ही। उसके बाद मैंने उबर उबर में एक उबर की गाड़ी खरीदी थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर ऑफ माय आर्टिकलशिप। I don't think I was even 18, but I bought a second-hand car from a person for an EMI, and I hired a driver, and I used to operate that Uber. 5 दिन में फट गई, ये अलग बात है। 5 दिन में वो एक दिन ड्राइवर नहीं आया, अगले दिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो मैंने बोला भाई इतना किचकिच नहीं, मेरे को तो ऐसा था उबर में गाड़ी खरीदूंगा लगा दूंगा, इतना किचकिच नहीं सोचा था। तो वो वापस से वो ड्रॉप कर दिया। बट दीज थिंग्स आई एक्सप्लोर्ड अलॉट बिकॉज देयर वाज नथिंग टू लूज पर से। थोड़ा छोट बहुत आज की डेट में अगर तुम देखो तो जो भी कमाया या जो भी गवाया, दैट लुक्स लाइक अ वेरी माइनर अमाउंट, राइट? बट द एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट गिव मी अ फीलिंग कि भाई तू करना हो जाएगा। That's what matters, right? एब्सोल्युटली। अच्छा, Yeah, ओ so I सो think that's it. Those are डेफिनेटली the businesses. डेफिनेटली आपको लूप होल के लिए बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। आई मीन बट आई गेस दिस इज वेरी ब्रिलियंट कि आपने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया। आफ्टर ऑल इट इज एक्सपीरियंस व्हिच काउंट्स डेफिनेटली। सो बट इसके अलावा देन हाउ डिड यू मैनेज योर लेक्चर्स? लाइक as far as I know कि आपके 5 months before your attempt you had 5 subjects pending. So what do you think went wrong? या फिर was it the approach that you still would prefer? No, see, that's not a approach which I would prefer right now, because right now the competition has gone to a next level. But I think there was no mistake on my part why the 5 months, why I had 5 subjects in hand despite having 5 months. The reason was at that time the new course was brought in, right? There was a new course that came into picture recently in 2018. 2018 में हमारा attempt second attempt था. So 2018 में they are trying to launch new course May 2018 mein, and here we are in 2017. We don't know whether to go for your old course or new course, so you can't take classes, you can't do anything, right? You can't take classes. So I think new course was the reason why I was not able to complete my syllabus, because तुमको बुक्स आई होगी December 2020 December 2017 में, and my attempt was in November 2018. अब वो बुक्स आने के बाद टीचर्स ने अपने क्लासेस लॉन्च किए, उनको जब जनवरी फरवरी जब भी उनको कंफर्टेबल हो पाया, और उसके बाद क्लासेस लेकर के हाउ कैन यू फिनिश? सो आई टुक DT IDT एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो एग्जाम के बहुत पास लेते हैं। पर उस समय नया कोर्स को समझने के लिए ही इतना टाइम लग रहा था कि मेरा वो unfortunately बच गया था. But then it was the preparation leave wherein things happened in such a way that unfortunate event became a fortunate event, right? But I don't think I would want to do that. But I think if everything remains the same, I would still have 5 subjects pending. I could not have done anything about it. I could have probably studied like a nerd, but I was not a nerd. So मैं मतलब मेरे से ऐसा होता था कि मैं हफ्ते में मेरे को एक मूवी जानी ही जानी है, सैटरडे को बाहर जाना ही जाना है, संडे को आरबीजी हॉस्टल में खाना नहीं मिलता तो बाहर जाना ही जाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब में पढ़ाई नहीं होती। फिर तुम रोज रात को अगर बाहर जा रहे हो तो सुबह 6 बजे उठ के क्लास से नहीं जा सकते तुम, और एक दो बार अगर क्लास छूट नहीं, और तुमको अगर तुम्हारे जैसे दोस्त मिल गए, उठ के जाओ तुम 9 बजे, बोले अरे भाई तू भी नहीं गया, तो फिर तो खत्म हो तुम। तो इफ एवरीथिंग रिमेन सेम, कुछ नहीं हो सकता था। अगर हाँ एक दो दोस्त नहीं होते तो शायद हम क्लास, या फिर एक दो अच्छे दोस्त होते तो क्लास चले जाते। जस्ट किडिंग, मारेंगे पकड़ के वो। एब्सोल्युटली। इस इंटरव्यू के बाद आई गेस कुछ तो आपके फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आने वाले हैं अब।
So as you mentioned कि RVG में you had friends and like RVG is something which gives CA students exposure जो कि college life जो वो miss करते हैं वो भी they can like cover from it. Like extracurricular activities में बहुत सारी opportunities RVG provides. So were you active into that? So for some reason I was not. I was not in the, executing committee. For some reason I was, कुछ होता है ना ऑपोजिट ऑफ एग्जीक्यूटिंग कमिटी, एक होते हैं जो काम बनाते हैं, कुछ जो काम बिगाड़ते हैं, एक होते हैं जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, एक होते हैं जो स्टेज के दूर बैठ करके तालियां बजाते हैं. मैं वो था जो दूर बैठा रहता था. सो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव, बट आई डिडंट यूज्ड टू बी एक्टिव ऑन द फ्रंट. आई यूज्ड टू बी एक्टिव ऑन द बैक. तो आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और हम लोग वो लास्ट में जो जो तुम्हारे इवेंट्स होते हैं हमारे आरबीजी के, तो जो लास्ट लाइन में हूटिंग कर रहे होते हैं ना, वो मैं था. तो वो स्टेज पे जो चढ़ के एंकरिंग कर रहे होते वो मैं नहीं था. सो I was active, but I was not in the participating committee. I was not in the, committee who used to execute such huge events. Okay. Fortunately or unfortunately, that I don't know yet. Okay. So RVG का क्या contribution रहा आपकी life में to make you the person who you are today? Like if any 1 or 2 points or qualities that you have developed over the span of your time in RVG. So RBG had a very, very big contribution in my life. And honestly, I've never thought about this before today. But I think it was RBG that made you meet people who had such high level of thinking. And what happens is, मेरे साथ किसी ने कोई बड़ी बात आकर के की, तो मैं ये नहीं सोचूंगा अरे वो कर रहा है मैं नहीं कर सकता. मैं ये सोचूंगा मैं भी तो और बड़ा सोच सकता हूँ. मैं बड़ा सोचूंगा, वो देख करके और बड़ा सोचेगा. That is how I think we grow. And RVG does so many things. Matlab, I don't want this to sound like RVG ka, but I think any hostel for that matter, the hostel which cares about the students who are staying in the hostel, they used to continuously help us upskill ourselves. They used to call big people from the industry. They used to make us meet the MDs and CEOs of listed company, which is impossible for a person to meet. And this is, I'm talking about pre-COVID, right? After COVID, things must have changed, I'm sure. But pre-COVID, they used to call, I don't remember because I'm very bad at remembering names, but they used to call, they had called one CEO of a very big listed company, and he used to mentor us and talk to us for about 1.5 an hour, 2 hours, and that's not something which person would get to experience outside RVG. So I think one that RVG helped me do was aim big, because it is very important, because everyone around you is aiming big. And second is work harder, because people, you want any sort of people, you'll find that sort of people. तुमको चाहिए दिन में 1 घंटे वाला पढ़ने वाला इंसान, वो तुमको मिल जाएगा. तुमको चाहिए दिन में 14 घंटे पढ़ने वाला इंसान, वो तुमको मिल जाएगा. Now it is your instinct with whom do you make friendship, right? और ऐसे छाट के दोस्ती नहीं बनती. तुम्हारे टाइप के लोगों से ही दोस्ती बनती है, जो तुम्हारे जितना ही पढ़ता है और नहीं मन होने पे नहीं पढ़ सकता है. तो तुम उस तरीके के लोगों से के साथ मिलो, पढ़ो, और तुम्हारा मेंटालिटी ऐसे ही बनता है, सब पढ़ रहे हैं तुम नहीं पढ़ रहे हो. तो उस तरह का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है. उस समय पे ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत नेगेटिव है, पर वही चीजें तुम लोगों को हेल्प करती है, टू एक्सेल, टू डू बेटर देन व्हाट यू वुड हैव डन अलोन इन अ रूम. जब तुम रूम में अकेले पढ़ रहे होते हो ना, तो तुम्हारा बेंचमार्क तुम ही होते हो. तो तुमको लगा था कल मैंने 4 घंटे पढ़ा था, आज मैंने 4.5 घंटे पढ़ लिया, बहुत कर लिया. पर तुमको क्या पता दुनिया में कोई और 12 घंटे पढ़ रहा है. So that used to happen in RVG. But I think I can go long about this, but RVG has helped me a lot, to become a better person first and then a better, student. So you sound like an ideal student, obviously securing AIR and then becoming a professor. But हमारे सूत्रों के अनुसार आपको RVG से restricate कर दिया था. So if you want to elaborate on that. I don't know what. No, so yes, I was rusticated from RVG for a week, and that was because कुछ नहीं किया था यार. हमने सिर्फ बर्थडे मनाया था, एकदम अच्छे से केक वेक ला करके काटे थे. केक काटने के लिए उन्होंने रस्टिकेट कर दिया. मतलब कोई सेंस नहीं बनता वैसे, क्योंकि स्टोरी इनकम्प्लीट है, बट आई थिंक विल लीव इट एट दैट कि रस्टिकेट. So now I really want you to recreate your result wala reaction. I mean, oh my god, AIR4 moment. आपको कैसे पता चला? What was the reaction of your family members, you yourself? मतलब क्या होता है? Recreate. I am not an actor to recreate, but I think I can honestly share my experience with you. And I think this is the best crowd where I can share my experience, because it's RVG, right?
and you asked how was your family members' reaction. So on the result day, I think 23rd of January, I was out. एक दिन हमारे आरबीजी में ट्रेंड होता है कि एक दिन पहले मंगल वो सुंदरकांड होता है, राइट? सो आई वाज एक्चुअली आई अटेंडेड दैट फॉर अ मोमेंट, एंड देन around 11:30 I left the hostel and I went out and I was out the whole night. I was roaming around because नींद तो आनी नहीं थी, और तुम मुंबई में हो तो हॉस्टल रूम में पड़े रह करके कोई सेंस नहीं है। तो मैं बाहर चला गया और फिर घूमे फिरे। अगले दिन भी सुबह जल्दी उठ करके हम लोग घूम ही रहे थे। प्लान ऐसा था कि पहले चले जाएंगे सिद्धि विनायक, वहीं बैठे रहेंगे, वहीं रिजल्ट देखेंगे कैसे खराब होगा। तो मैं चला गया था, हम लोग, मेरे कुछ दोस्त आ रखे थे पुणे से, हम लोग सारे के सारे चले गए सिद्धि विनायक और हम लोग बैठे हुए थे। और रिजल्ट आने का था करीबन शाम के 5-6 बजे, तो हमारे मेंटली वही प्रिपेयर थे और हम सिद्धि विनायक में सुबह से बैठे हुए थे। हमने पहले से लंच कर लिया, हमने 12-12:30 बजे लंच कर लिया, क्योंकि हमने बोला रिजल्ट आने के बाद तो भूख लगनी है नहीं, फिर तो वैसे ही खा नहीं पाएंगे, तो लंच पहले ही निपटा लो। फिर उसके बाद हम वहां से निकले टू गो टू हाजी अली दरगाह, कि वहां जाके बैठेंगे, अभी सारे भगवान को खुश कर लेते हैं उसी दिन। तो हम ट्रेन में थे और रास्ते में जब ट्रेन में जा रहे थे तभी कॉल्स आने लग गए कि रिजल्ट आ गया। तो हम लोग बीच में ही किसी स्टेशन पे उतर गए और हम लोग सब स्टेशन पे, सबके सब अपने स्टेशन पे रिजल्ट चेक कर रहे। तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैड अ रैंक, आई वाज एट द स्टेशन, आई वाज एट द रेलवे स्टेशन। कॉल्स आ रहे हैं, मतलब वो रिजल्ट का डे तो, लाइक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट टू नो द रिजल्ट, बट द मोमेंट आई गॉट टू नो AIR4 एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो when my dad got to know AIR4, that was an amazing moment, and I don't think that will ever come in life. Probably, I don't know. I'll let you know if it ever comes, but it hasn't come in the last 4 years. But I think the best part about that, which I usually don't share because people can't connect, but I think RVG audience can connect, is that उसके बाद में चला गया, हम हाजी अली दरगाह जा ही रहे थे तो हम वहां चले गए। पीछे जाकर के वहां पे एकदम वो नदी के पास बैठे बैठे थे, एकदम हवा हवा चल रही थी शाम के 5-5:30 बजे। उतने में मेरे को हॉस्टल से कॉल्स आने लग गए कि भाई रैंक आई है, आजा तू हॉस्टल आजा, फटाफट हॉस्टल आजा। देयर वाज अ गाय नेम्ड हर्ष काबरा। वो उस समय में कहा था ना, जो एग्जीक्यूशन कमेटी वाले लोग होते हैं, वो उसमें हुआ करता था। तो ही केप्ट ऑन कॉलिंग मी कि आजा आजा। पहले तो मैंने उसको कहा भाई AIR4 आया है, तो कहता है मैं मान ही नहीं सकता, तू सर्टिफिकेट भेज। तो उसको मैंने फिर भेजा, मैंने स्क्रीनशॉट, मैंने बोला इतनी बेइज्जती मत कर, आया है, मैं मान तो मैं भी नहीं सकता लेकिन तू मत बोल। तो फिर उसको मैंने भेजा और सर्टिफिकेट वगैरह भेजा, और फिर वो बहुत पुश इंसिस्ट कर रहा था आजा आजा करके। तो मैं 5 बजे की बात है और मैं दौड़ते भागते 7 बजे तक आई रीच्ड हॉस्टल। एंड दैट मोमेंट, मैं ऑटो में आ रहा हूँ और ये लोग सब बाहर खड़े हुए थे, काफी सारे लोग थे और इन्होंने ढोल वगैरह बुलवा रखा था। तो ये लोग, ऑटो से मैं उतरा, ये लोग मेरे को कंधे पे बैठा करके दे ब्रॉट मी इनटू द हॉस्टल and we danced like crazy for about 2 hours, 2.5 hours, like crazy we danced and we were like, everyone is super happy, and I felt like, यार तुम क्यों खुश हो रहे हो? They're like, जो जूनियर्स होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, राइट? दे आर लाइक, हाँ ऐसा होता है, दे गेट दैट वाइब्स कि हाँ हम भी ये कभी करेंगे। तो इट फेल्ट सो पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई भी ऐसा कि यार इसको रैंक आ गई। एवरीवन वाज हैप्पी एज अ फैमिली कि यार हमारे ही जगह का एक बंदा रैंक लेकर के आया है। सो आई थिंक that day, I wish I had more videos of those days, that day, but that it didn't matter that time, right? I didn't want to capture it on a camera. I just wanted to live every moment. So I was the last one who, so there were 3-4 people along with me. We danced till the end. We were like, नहीं रुकेंगे आज। तो जो लोग पास भी हो गए तो वो लोग खुश, और मैं तो खुश था ही, और मेरे साथ जो लोग खुश थे, हम लोग नाच ही रहे थे। So I think that was the moment which would not have happened for a student who is not from RVG, or you know, मॉम डैड तो सभी के खुश होते हैं ना यार। इस तरह का ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है? ये तो इस, मतलब मैंने कभी किसी और हॉस्टल के बारे में सुना भी नहीं है। इतना प्यार किसी और हॉस्टल में, वो आरवीजी में होता है। और उस समय ना मेरे को एक बार के लिए वो स्ट्राइक किया था कि यार तुमने मेरे को 7 दिन के लिए रस्टिकेट किया था, आज तुम ही मेरे को कंधे पे अंदर ला रहे हो। सो इट ऑल काइंड ऑफ कनेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी। सो that was a very pleasant moment, but it didn't come at all with arrogance कि यार मेरे को निकाला था मैं रैंक आ गई, because मेरी खुद की ऐसी थी कि भाई रैंक कहाँ से आ गई। तो मेरे को वो, you're not like, तुम ऐसे नहीं चलते कि मेरे को पता था रैंक आनी है, कहाँ से पता था? डर लगा रहता है, क्या पता रिजल्ट रिवाइज करते बोले रैंक गलती से दे दी थी हमने। तो that was an amazing moment. Yeah. Wow, even I feel happy for you. Like, wow, it's amazing. I'm sure. मतलब इतने महीनों का hard work, and it finally pays, and you see the result. Amazing moment. So, result आने के बाद you got an all India rank. Then, फिर उसके बाद में did you, like, how did you decide कि आपको business करना है, or you want to, you know, practice, या फिर मतलब कैसे decide करते हैं? Because that is something
No, so my results, when you get a rank, you don't think of a practice because rank opens a lot of doors for you, right? So I had made a point that abhi to main jo bhi best opportunity milegi, that I'll seek and then I'll take the opportunity. But unfortunately, jo us samay pe अच्छे opportunities aaye the mere paas, I could not take them. I had to take a step back and I had to stay at home for some time. Then after 6 months, when I went out in the market, I really didn't find that great an opportunity because ek aad aur attempt ke results aa gaye the, and student and people were like, they were hiring me for an average pay, not at the ranker's pay that usually a rank holder gets. So that time I decided कि बस एक बार तो job लेनी है because usually parents get very happy when you take a job. They are like, भाई secure हो जाती है life, तुमने CA कर लिया, लाखों में पैकेज आ रहे हैं तुम्हारे, तो तुम्हारी life secure है, वो खुश हो जाते हैं. तो मैंने बोला job तो करनी है. और बहुत हमको क्या है ना, experience की बहुत कमी होती है और आज भी है और 10 साल बाद भी रहेगी. हमको experience चाहिए होता है. तो तुम अगर ऐसा job करो जहां पे तुमको experience अच्छा मिल रहा है, तो इट्स वर्थ डूइंग. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद मुंबई एयरपोर्ट. वहां पे जो सीईओ थे उनके, I was a executive assistant to him, so I used to report to him directly and I used to work with him directly. So every business head used to report to him and I was in the room when people used to report to him and I used to learn how he does business. So the fun part is, the reason why I got that interview was because of the टिकट्स दैट आई यूज्ड टू सेल. आई टोल्ड हिम. उसने बोला बिजनेस का स्किल्स कहाँ है तुम्हारे अंदर? तो मैंने उनको वो स्टोरी बताई कि सर मैंने ऐसे बिजनेस किया था और इस तरीके से मैंने लूपहोल निकाल करके आई यूज्ड टू अर्न दिस मच. सो दैट इम्प्रेस्ड हिम एंड दैट गॉट मी दैट रोल. बट then it was an amazing role. I did it for 1 year, but then Adani took over the airport and there were some things that happened when merger and acquisition happened. So I didn't want it. They were switching my department because they didn't want me to work with the CEO, so they were switching department. So I thought, well, let's jump. So then I got an opportunity with venture capital firm named Guild Capital. तो ऐसे ही चलता रहा. So it was to get into job, there was not an option to do business. It was definitely to do business in the long run. But when you do such kind of job now, you learn that how departments are functioned, how do you act when you are a CEO. Those experiences are very important and it is not easy. You can't learn them all by experience. It has to come by कुछ चीजें दूसरों की गलतियों से सीख लो, काम खत्म. So yeah, that's how I decided to do job. Okay, and then where did teaching come from? Okay, so teaching was always in my mind. Okay, so even when I was in RVG, I had a friend of mine. मैं इनफैक्ट लॉ मैं शाम को जाकर के क्लास में पढ़ के आता था और मैं अपने जो मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ ही एग्जाम था उसका, मैं उसको पढ़ाता था 2-3 घंटे, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मेरा रिवीजन हो जाएगा और मोटिव ये भी था कि अच्छा लगता है, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ाता था. मैं तो उसको होमवर्क देता था. वो मेरे को आज गाली करता है कि होमवर्क देता था तू, पर मैं उसको होमवर्क देता था. पता नहीं वो उस समय मेरे को कैसे सह लिया उसने. पर teaching was always there. And I think sometimes when things are meant to happen now, I thought about teaching for like 3.5 years. I didn't start. I could have, immediately jumped into teaching, but then some things are meant to happen at the time when it has to happen. So it was a random night. I remember it was around 3:30 in the night, and some things happened. Okay, I'll not say what things happened, but some things happened that made me decide that was no, I want to teach. What do you want to teach? I want to teach law. So when you're a teacher, subject doesn't matter you. What matters to you is, I just want to teach because I know the art of teaching, how to present things in a manner that people can understand and absorb it. So I just wanted to teach. So you won't believe, 3:30 in the night, I woke up and I was like not sleeping. I was on my phone. I woke up, sat on my computer, opened Canva and made a banner, a very raw banner. Ki I'll be teaching. The class will start from next weekend and the registration is for 1,000 rupees and whatever it was. And I just launched it on LinkedIn the next day morning 6 o'clock. 6 बजे तक मैंने बनाया, 6 बजे मैंने लॉन्च कर दिया. I didn't ask anyone, I didn't consult any friend, because अगर कोई बोल दे नहीं भाई छोड़ना, तो तुम्हारा खत्म हो जाता है. तो मैंने बोला अभी 3:30 बजे किससे बात करेंगे. तो I launched it and then जो होगा देखा जाएगा, वो मैंने सोचा. But eventually I remember the first class that I took, it was of 3.5 an hour. I spoke continuously for 3.5 an hour, and the positive energy that I got after completing the class, and I'm like so happy. And even now it happens after every class. अगर मेरा 5:30 से 8:30 क्लास है, तो वो 8:30 बजे के बाद जो खुशी मेरे को होती है ना, that is the feeling that for which I spend those 3 hours. So it's a passion, and every teacher would agree to this कि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं टीचिंग मेरा पैशन है, बस पर जिस एनर्जी से हम लोगों को काम करना होता है ना, तुम सुबह 7 बजे उठा लो वही एनर्जी रहेगा, रात को 2 बजे बुलवा लो वही एनर्जी रहेगा. आई थिंक दैट कम्स ओनली व्हेन इट इज आउट ऑफ पैशन. इट कैनॉट कम
The other factors, reach to students, money, monetary matters, these cannot be your driving factors. अगर ये driving होंगे तो कुछ समय बाद तुम पीछे हट जाओगे, भाई बहुत हो गया, बहुत स्टूडेंट्स हो गए, बहुत पैसे हो गए. पर ये जो पैशन है ना, that is why you see big faculties like Praveen Sharma, Praveen Jindal, they are still going on. They can't quit teaching. They can't quit teaching. That's into their soul. अगर वो teaching छोड़ देंगे तो घर में बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो. So that is how it all started, and I got into teaching law, and then I got into teaching inter law, and then things happened. Wow, amazing. And your passion is in fact a blessing for so many students. Like especially I mean November 22 students recommend your law की revision book so highly, and in fact they have especially told me कि सो को एक बार thanks जरूर बोलना उनकी book के लिए. It is so useful for them. So thank you so much for that. And again, like a question adding on to that, कि what do you think is the reason for success of your book and classes? What do you think worked for you? I think the intent worked. The intent was to provide a material to students that they can use on their first day also and the last day also. There has to be a very good balance between that. The intent was, आज मेरा जो स्टूडेंट होता है वो क्लास के साथ भी वही मटेरियल पढ़ता है और एग्जाम के पहले भी वही मटेरियल पढ़ता है, ना उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा कट होती है, ना उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती है. सो that is the intention. That was the intention, because otherwise what you do, you buy a big book as a reference book, you're like मेरे को expert बनने का है, but my book will make you equally the same expert, and then you try to boil it down, and I'm like यही तो मैं दे रहा हूँ तुमको. So that is how I think, that is why it worked out, because it is very important that the book that you start with, if you carry it with yourself on the day before exam, you're good to go for any subject. So that is why I call it the ultimate solution. The name actually was a feeling for me when I was actually going through my book for proofread. तो मेरे को वो feeling आ रही थी कि यार तूने ये भी cover कर लिया, तूने ये भी cover कर लिया, because every section happened in a day. It was not कि एक दिन में book लिख दिया, 4 महीने में book लिखा है मैंने, रोज 3-4 घंटे डाल के मैंने book लिखा है. So each section when I'm putting in effort, I'm not rushing, I'm not कि ये छोड़ देते हैं, ये कम कर देते हैं. मेरा intention था पूरा coverage, least words. So I think the intent worked well. I think that worked. That is what touched the students. Wow, absolutely amazing. And uske alawa, if you can recall a decision which you took from your guts, जो कि was against the normal current and normal flow, maybe आपके friends ने मना किया था, आपके parents ने मना किया था, but in the hindsight, now that you look at it, आपको लगता है कि it actually worked and it was a right decision after all. So there are many such decisions, but I think the biggest decision and the toughest decision that I made, which worked out, it worked like a charm, was to switch the course from old course to new course. So I exactly remember this thing happening, and I'm not exaggerating. Okay, I'll absolutely say what happened. हम लोगों को डिसीजन लेना था ओल्ड कोर्स में एग्जाम देना है कि न्यू कोर्स में एग्जाम देना है, और मैंने अपना एक्सेल शीट खोला था. अपना डिसीजन मेकिंग एक्सेल होता है, तो मैंने एक्सेल खोला, मैंने ओल्ड न्यू लिखा, मैंने प्रोस कॉन्स लिखे, मैंने पूरा प्रोस कॉन्स डाल दिया. वुड यू बिलीव दैट वन ऑफ द प्रोस दैट आई हैड रिटन वाज कि भाई शुभम, जितने भी रैंक होल्डर्स होते हैं ना, वो एग्जाम के 2 साल पहले तैयारी कर देते हैं. तू नालायक की तरह अभी तक तूने कोई तैयारी नहीं शुरू की है. तो जितने क्लीन क्वालिटी वाले लोग हैं वो सारे ओल्ड कोर्स में भिड़ गए हैं, वो अभी न्यू कोर्स में स्विच नहीं करेंगे. अब न्यू कोर्स में कौन शिफ्ट करेगा? जैसे जिसका सबका बेड़ा गर्क है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है. तो अब जब तुम रेस में भागने की बात कर ही रहे हो, तो वहां से शुरू होना चाहिए ना, जहां सब एक जगह पे है कि किसी की पढ़ाई नहीं हुई है, सब रेस में दौड़ रहे हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है. You might end up getting a rank if that is the race where you run, is what I had exactly written in Excel, and exactly that is how it happened. That was the reason for my decision, and that is what happened in new syllabus. If you see new syllabus, जो मैं 1 साल पहले डिसीजन लिया, उस दिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया, और सारे वो लोग थे जो पढ़ाई नहीं शुरू किए थे उस समय तक, उस दिन से उन्होंने पढ़ाई शुरू किया. तो जब अगर मैं भी 3 साल पहले पढ़ना शुरू कर देता, तो शायद मेरी भी ओल्ड कोर्स में भी रैंक आ जाती. And उसके अलावा again, a new scheme is being launched by ICAI. So what are your opinions on that? And आपके future plan क्या है? As we all know कि you teach law, so. Yeah. One, I'm fortunate enough that this thing happened within 1.5 years of my career and not 5 years after my career, because that would have been a little difficult to take. But I think
I think these changes are a bigger opportunity for youngsters like us who are very aggressive and would want to do anything. As I had announced that day when the new scheme was announced, I had announced कि बस अब तुम लोगों को और चीजों का अल्टीमेट सोल्यूशन मिलेगा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो द पॉइंट इज दैट आई took it does it hurt? Yes, it of course does, because it's like an attempt for me. It's like an attempt for me. But to be very honest, when the rank thing happened, I was mature enough to realize one thing, that Shubham, academically you have not failed anywhere. Academically तुम्हारा CA फाउंडेशन मिल गया, CA इंटर मिल गया, CA फाइनल भी हो गया, तो इतनी आसान लाइफ होती नहीं है. तो तुमको दूसरे फील्ड्स में अपने फटके पड़ेंगे तो वो खाने के लिए तैयार रहे. तो जब या तो अब बहुत खुश हो जा, क्योंकि जब फटके पड़ेंगे तो बुरा लगना है. तो उसी तरीके से मैंने सेलिब्रेट की थी अपनी खुशी. तो नाउ आई वाज लाइक ठीक है, मतलब इफ बिग थिंग्स आल्सो हैपन टू मी, आई एम लाइक हाँ होना था, ठीक है, बनता है थोड़ा थोड़ा. सो आई थिंक law is not technically getting shut. What is happening is they will be bringing a lot of volume in the inter. It becomes very challenging for me to explain the same things that I explain in CA final to a students who are 3 years younger with zero practical experience, right? A student with zero practical experience को हम CA final के level का concept, अब वो है तो CA final का concept, तुम तो 20 साल से रख ही रखे थे उसको CA final में. तो I think that it is a very difficult thing for me as a teacher, but I think whatever ICI is doing, I am too small to comment on whether it is correct or wrong. But I think इतना फ्रीक्वेंटली कोर्स मत चेंज करो, कि कोर्स अपग्रेड करो, कोर्स ऐसा ड्रास्टिक चेंज मत करो, बिकॉज अभी नवंबर 2018 ये मई 2018 में इन्होंने सिलेबस चेंज किया था. Then they gave 3-4 attempts for the people who are in the old course. Now that old course people who could not clear in those 4 attempts are now giving in new course. Now for those new course people you are again making new course. So there is a problem to some people. और मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है हमेशा, ऐसे इस वीडियो के थ्रू नहीं पहुंचेगा पर पहुंच जाए तो अच्छी बात है, कि अगर चेंज कर रहे हो तो क्वालिटी लाओ. मतलब ऐसा लाओ क्वालिटी की पढ़ाने वाले को भी लगे कि यार लेवल है, और पढ़ने वाले को भी लगे कि यार लेवल है. रट्टाबाजी मत करवाओ, क्योंकि रट्टाबाजी करके किसी का भला नहीं होना है, ना पढ़ाने वाले को मजा आना है, ना पढ़ने वाले को मजा आना है. तो तुम क्वालिटी बढ़ाओ, केस स्टडीज लाओ, तुम और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस लाओ चीजों का, तुम भी मेहनत करो क्वेश्चन बनाने में, विच आई थिंक इज देयर इंटेंट. बट समटाइम्स इंटेंट एंड एग्जीक्यूशन डिफर्स, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट माय प्लान्स आर, आई डोंट हैव प्लान्स. इट्स लाइक अगेन, इट्स लाइक where do you see yourself 5 years down the line? I thought I had answers. 6 महीने पहले तक मेरे को आंसर था कि as a law professor, but that answer changed drastically, right? So I definitely don't see myself in a corporate job, but I do see myself doing something which actually creates an impact, because I think the only thing that I always crave for is the feedback that we get from students, right? कल किसी ने मेरे घर पे मिठाई भिजवाई, परसों किसी ने मेरे घर पे चॉकलेट्स भिजवाए, तो मैं तो खुश हूँ. और मेरे घर में एक 1 साल का नेफ्यू है मेरा, वो मेरे से ज्यादा खुश हो गया चॉकलेट देख के, और मेरे पापा खुश हो गए कि वो इसको चॉकलेट्स भिजवा रहे हैं स्टूडेंट्स. सो these are the things that I crave for. So that is when you make an impact. You just teach law, people will not care, right? You like everyone can teach law, who can't teach law, but you make an impact, you motivate a person, you make a change in them. I think that is what matters. So I think that is the direction that I'm looking for, and that is what I'll pursue. तो तुम लोग बहुत छोटे हो शायद, जो लोग देख रहे हो, तुम लोगों को ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी लगेगी, पर ठीक है. आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. राइट. अच्छा, फेयर ना, आई गेस इस वाले फ्यूचर प्लान के बारे में आप थोड़ा ज्यादा नहीं बता पाए, बट एक आरवीजी का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है जो कि लाइक द नेशन वांट्स टू नो, कि फ्यूचर प्लान्स अबाउट योर मैरिज वो क्या है? अरे यार, अभी गर्लफ्रेंड वाली उम्र है, ऐसे सवाल पूछो, शादी कहाँ से ला रहे हो तुम, पापा काहे बन रहे हो, ये सब सवाल मत पूछो. बट ऑनेस्टली नो प्लान्स इन द नियर फ्यूचर, नॉट एटलीस्ट. अभी तो देखो क्या है, लॉ सेट हो रहा था अभी तक, बट अब वो सेटिंग हिल गया है, तो वापस 1-2 साल सेट होने पड़ेंगे. तो अभी तो कोई ऐसे प्लान्स नहीं है, और अभी शादी वादी तो कोई प्लान. हाँ, सो लाइक मेरा इंटेंट वाज जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि आरवीजी की मैट्रिमोनियल साइट भी है, सो इफ यू वांना, बट एनीवेज. Oh, okay, I just said I'm not interested in marriage. Okay, so I'll ask you 2 years later. Yeah, for sure. So thank you so much for this interview. But अब last में जाते जाते, if you have some words of wisdom, advice for the fellow students here, CA final aspirants. नहीं, so CA final, CA inter aspirant जो भी है, I think the only point that I want to say is
कभी जब तुम बड़े होते हो ना, तो तुमको रियलाइज होता है, जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, तो मेरे को रियलाइज हो रहा है जो हमारे बचपन के छोटे छोटे मूवीज थे ना, उसमें जो छोटी छोटी बातें करते थे ना ये लोग, जब हमको उस समय डायलॉग लगता था, ये बहुत मीनिंगफुल होते हैं। जैसे कि अपना जो 3 इडियट्स मूवी था, उसमें वो कहता है एक्सीलेंस के पीछे भागो और सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे पड़ेगी। सो एवरी टाइम अ पर्सन आस्क्स मी अ क्वेश्चन कि तुमने क्या अलग किया था जिससे तुमको रैंक आई, क्यों तुमको लगता है तुमको रैंक आई, तो मैं एक ही चीज समझता हूँ कि मैंने कभी रैंक मांगा ही नहीं था। आई नेवर एक्सपेक्टेड फॉर अ रैंक, द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू वाज गिव माय बेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को ना, जब भी मैं पढ़ता था ना, तो मेरे को वो मूवी याद आता था जो मैं देखा, तो मेरे को लगा भाई तूने बहुत कांड किए हैं, तूने मूवी वूवी जाकर के देखता था तू, और पता नहीं पढ़ाई लिखाई तो करता ही नहीं था, तुमने क्लब जाना है, सबसे पहले सब चीज आती थी, बाद में पढ़ाई आती थी। तो मेरे को लगता था ये सारे जो मैंने कांड किए हैं इसके मेरे को मिलेगी सजा सीए फाइनल के रिजल्ट में। सो आई यूज टू रीड आउट ऑफ पैनिक। मेरे को यही लगता था भाई 5 महीने बचे हैं, जो कर सकता है कर ले, बाकी भगवान के हाथ में डाल दियो। सो ईच डे of those 5 months, I craved for excellence, to give my best, give my best, give my best. And when I used to give my best also ना, I never used to think अरे वाह 12 घंटे पढ़ लिया, मैं यही सोचता था किया है ना पाप, कल भी पढ़ना पड़ेगा। So I think that thing is what made me get a rank. And I think even in my life, जैसे कि अवनी ने पूछा कि why do you think your ultimate solution is a hit? Because the effort that it went into, the effort was to make it an excellent book, and that is why it became whatever. It gave me all the recognition that I wanted, right? So the point is that whatever you're doing, crave for perfection, crave for excellence, do it absolutely with your whole heart into it, and I promise you success will come. It'll come at its own time. It has its own time, but it'll definitely come. I think that's it from my end. Thanks a lot, guys. I wish we had a proper conversation. I could have seen you without lag. मेरे को थोड़ा अजीब हो रहा है, रियल टाइम रिएक्शन नहीं मिल रहे, बट पक्का lag नहीं था। हाँ हाँ, वीडियो परफेक्ट, नो लैग। आगे बढ़ा के देख लिया। हाँ That portrays your like. Thumbs up. ओके, ठीक है। Okay, so now let's नहीं, so I won't say let's continue, right? It will be edited. हाँ ठीक है। You guys will have to major edit in this video. हम लोगों को बहुत edit करना पड़ेगा। I guess we have a marketing team for that who will take care of that. But ये वाला I guess बीच में ही कट गया था ना? Your answer was not completely, not wrong. हो गया? No, it is again. I said completely वो काट सकते हो, मैं अभी तो रुका नहीं मैं काट सकता हूँ। Okay, ठीक है। So I guess we have covered सारे questions mostly. Am I audible? Yes. I think we are guys ready. Yeah. बोला कैसे ये? I have a nephew and he is like Sunday. Anyway, Okay. he's like 1.5 years old and he's like Monday to Saturday, like Sunday, like Monday to Saturday. Yeah. Okay. So actually सो मीटिंग खत्म होने वाली है 3 minutes. So आपके साथ एक नई लिंक शेयर करते हैं. And then we'll join on that. Okay, good. अच्छा, इसी में Thanks a lot, guys. And guys, thank you Avani and the team who's ever coordinated for bringing me here. You are doing an amazing work, and these are the things that is the thing that you should do at the time of COVID. And thank you for taking this initiative. Thanks a lot. thank you once again for this insightful conversation. I'm sure it will be very useful for us. Thank you so much. So I guess that should be it. Thank you. Yeah. So team, एक बार वीडियो समझ गया? हाँ, we'll end it. हाँ. Audio. देखो तो